What is happening, guys? My name is Mihir Merchant. Welcome back to the channel. स्वागत है आपका. Today we are talking India versus England, the second test match, day one. The first test match was pretty much washed out by rain. You can say बारिश ने पूरा मज़ा ख़राब कर दिया था, especially क्योंकि India वो मैच जीत सकता था. But the second game also pretty much started on the same level, pretty much started in the same weather conditions. There was a lot of rain in the morning. And you're thinking to yourself, oh my god, not again, this is the summer. But the gods helped us a lot this time. They cleared the skies for a good day of cricket ahead. The sunshine on for the next 7 hours. Beautiful day of cricket. And what we saw was nothing short of beautiful. Some really solid batting by the Indian openers put India in a very strong position straight up on the first day. India in the day at stumps with 276 for the loss of 3 wickets. If you talk about the toss before even a single ball was bowled, England won the toss and chose to bowl. They put India to bat और इससे अच्छा इंडिया का जवाब हो ही नहीं सकता था टॉस हारने के बाद भी. And you have to feel a little bit for Joe Root here. I feel sad for him because in the previous game they went to bat first and they were all out for 183. This game they won the toss and they put India to bat, but they are 276 for 3 on the first day. That you just have to feel sad for him. देखिए पहले दिन पे इंग्लैंड में लॉर्ड्स पे 350 रन बन जाना कोई छोटी बात नहीं है. 3 विकेट गिरे हैं लेकिन पहले दिन पे 350 रन बन गए हैं और वो क्यों बने? Because of the KL Rahul and the Rohit Sharma show. Definitely, that is what I'm calling. This was the theme of today. Today was just a big flex on the whole world by Rohit Sharma and KL Rahul. These two batsmen have played such amazing cricket today. They've batted at an elite level that you just don't see. Definitely not from Indian openers overseas. In the previous match, Rohit Sharma and KL Rahul made the highest score of 97 by an opening pair, and in this game they have gone and done one better. They've completed the century. First century in 11 years from Indian openers outside of Asia. If you go check the highlights, you will see what I'm talking about. It's just exquisite batting, man. Just too good. अभी तो सिर्फ पहला दिन हुआ है तो आगे 4 दिन में खेल और बदल सकता है. शायद बारिश भी आ जाए पहले गेम की तरह, तो आगे का बोलना अभी तो थोड़ा जल्दी होगा. बट इफ़ इंडिया अगर यहाँ से मैच जीत जाता है तो आई थिंक वापस आके पहले दिन की तरफ देखना पड़ेगा जहाँ इंडिया ने गेम बदल दिया. दिस पार्टनरशिप इसका बहुत बड़ा पार्ट होगा अगर इंडिया यहाँ से गेम जीत जाता है तो. Start slow हुआ था. India had a very slow start, but then Rohit Sharma was the one that was just taking it one step further. KL Rahul ने तो बहुत ही starting में पहले slow खेला था, but Rohit Sharma was the one flicking balls left, right and center, especially to Karan. At that point, I think England को समझ आ गया था. At that point, England understood, right, that India is going to be batting exceptionally well yet again. In the first game, I think India definitely had batted well, and this game again very early in the game, especially when Rohit Sharma hit those 4 boundaries to Sam Curran. That's when I think everybody in the English team knew that this is going to be a long day and a very long match if England do not get India all out. So batting wise, I think India was definitely, you can give them an A plus from what you've seen on the first day. 276 for 3 is a very solid total. From now on, if they can stabilize the innings, the 2 batsmen at the pitch and even the ones to come, I don't 400 450 is not far away, which is exceptional for first inning at Lords against England. संभाल के खेलना होगा आगे के बैट्समैन को. अभी जो खेल रहे हैं वो और आगे आने वाले हैं वो भी. 400 450 तो कहीं नहीं गया इंडिया का. रोहित शर्मा को आप कम क्रेडिट मत देना, बिकॉज यू कैन सी, इफ़ यू जस्ट सी द हाईलाइट्स अगेन आपको पता चल जाएगा. वो बहुत ही अच्छा बैटिंग किया रोहित शर्मा ने. 100 उनका 100 नहीं हुआ ठीक है, पर फिर भी क्रेडिट उनको उतना ही जाता है जितना कि KL राहुल को जाता है 100 बनाने के बाद भी. He had a very good start to the innings. Rohit Sharma just unfortunate to not get his hat-trick. Just very unfortunate to not reach his century. But the good news for India was that KL Rahul picked up right where Sharma had left off. And वो बहुत ही एक अच्छी पार्टनरशिप आपको देखने को मिली, स्पेशली फ्रॉम राहुल जो इतना ओपनिंग बैट्समैन की पोजीशन पे नहीं खेल रहे हैं. उनकी वर्सेटैलिटी ये है कि वो कहीं भी खेल सकते हैं. 1 डाउन भी आ सकते हैं, 2 डाउन भी आ सकते हैं. बट ये इनिंग्स के बाद और पिछले मैच के बाद आई थिंक उन्होंने अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई कर ली है एट द टॉप. आई थिंक he is looking good for the future of Indian cricket at the top, at least for test matches.
Well, let's talk about the bowling, and it was pretty decent. You can say the two bowlers are pretty reliable, and they have shown it. Well, they couldn't really keep the cap on the runs because they were just flowing from everywhere, but they took 3 wickets, 3 good ones. First one was Rohit Sharma. He was looking like a man in form, and you just didn't expect him to get out in that manner. But Jimmy Anderson, man, what do you even? Whatever you talk about him is less. How much ever you talk about him is less. That ball coming in and just cleaning him out, you cannot do anything against bowling like that. देखिए जिमी एंडरसन जब भी बॉल करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हमेशा ये खतरा रहता है, बॉल अंदर भी आ सकती है, बॉल बाहर भी जा सकती है, तो एक फोकस बना के रखना आई थिंक वाज बहुत बड़ी बात होती है। आप जिमी एंडरसन की बहुत अच्छी डिलीवरी पे बोल्ड हुए तो आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो एक महान खिलाड़ी बन चुके हैं गेम के। सिर्फ थोड़ा बुरा लगा क्योंकि रोहित शर्मा की 100 नहीं हो पाई, बट रियली गुड बॉलिंग बाय जिमी एंडरसन येट अगेन। हाउ मेनी टाइम्स डू वी से दैट? द सेकंड विकेट वाज पुजारा, एंड आई थिंक दिस वन इज गोइंग टू बॉदर द बैट्समैन अ लिटिल मोर। आई थिंक ही विल गो होम, आई मीन go home, just go back to the hotel and think about it. पुजारा वैसे भी थोड़े नर्वस लग रहे थे क्योंकि वो पिछले कई इनिंग्स में इतने अच्छे स्कोर नहीं बना पाए हैं, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है जब भी आप बैट करने जा रहे हो, और स्पेशली जब भी जिमी एंडरसन और रॉबिन्सन बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा तो खतरा रहेगा ही। अगर आप उनके विकेट पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि पिछली मैच में जो आउट हुए थे वो अंदर आती हुई बॉल से निकल गया था, और इस टाइम आप बाहर जाती हुई बॉल को भी खेल बैठे हैं, तो दिस शोज़ कि ही इज़ नॉट इन फॉर्म। ये ऐसी विकेट दिखाती है कि वो अपने माइंड गेम्स में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उनको भी पता है उनके बैट से रन नहीं आ रहे हैं, उनको भी पता है, और वो पिच पे शो कर रहा है, वो नर्वसनेस दिख रही है, वो नर्वसनेस के साथ वो खेल रहे हैं। और तीसरा विकेट था दिन का विराट कोहली राइट टूवर्ड्स दी एंड, दिन के आखिर में आया वो विकेट, और वो भी देख के बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हुआ। मुझे लगा नहीं था कि इंडिया का एक और विकेट जाएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज सून एज इंग्लैंड गेट द न्यू बॉल देयर पेसेस आर गोइंग टू कम एट यू ऑल गन्स ब्लेजिंग, एंड विराट कोहली वाज जस्ट अनदर विक्टिम ऑफ दैट। कोहली भी हम सोच रहे थे कि पिछले मैच में 0 पे आउट हुए थे गोल्डन डक पे, तो इस मैच में वो ना हो और थोड़ा अच्छा स्कोर बना के पाए। 40s में स्कोर करना इज़ नॉट दैट बैड, बट आई थिंक सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो विराट कोहली है कि वो लंबा इनिंग्स खेलेंगे और एक सॉलिडारिटी लाएंगे, बट nevertheless you have to give credit where credit is due, and I think that was a brilliant ball by Ollie Robinson, and he has been just just putting them in the slot, and it's a big wicket, so he deserves that. If you talk about the sessions, I think India definitely dominated the sessions as well. 3 सेशन होते हैं दिन में, पहला वाला the first one is definitely belongs to India. अगर आपकी 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाती है तो कोई चांस नहीं है कि बॉलर्स ने उस सेशन में कुछ भी अच्छा किया। The second session we would say I think was a draw. I don't think England deserved to be the winners of the second session, even though they managed to get 2 good wickets. I think the 100 plus runs that were leaked in that session definitely puts India in competition to win that session as well. Third and final session I think again belongs to India, because even though they lost the wicket of Virat Kohli, which is a big wicket, but I think the runs kept on coming even in the third session. KL Rahul just went from strength to strength, and I think that just puts India in a very solid position. So I think 2 out of the 3 sessions India dominated. सुबह वाला और शाम वाला session India ने dominate किया, and the middle one, which was I think a shared session, I think it's fair to say that. So the summary for day 1 has to be some exquisite batting, some decent enough bowling, but I'm sure the majority of the highlights will belong to the Rohit and the Rahul show. बहुत सारे अच्छे shots देखने को मिलेंगे if you see the highlights again. Definitely पूरा दिन इंडिया का नाम रहा। KL Rahul gets his name in the history books for being a centurion at Lord's. Ollie Robinson and Jimmy Anderson are looking in fine fettle, but they will need to work really hard tomorrow on the second day to wrap up India's innings. But as far as India is concerned, the 2 batsmen on the pitch are really capable of taking it the distance. This sets up a very exciting day 2. England will want to finish India's innings off. India look like they're not going to help England do it. That's it for day 1. I'll see you with a day 2 video for tomorrow.